है ना? सब लोग मैथ्स होमवर्क कर रहे हैं. That is why I don't give written homework. जो पूछना है वो बेटर रहता है, पता चल जाता है कितना होमवर्क किया ईमानदारी. वरना ये हाल है, लेक्चर के पहले तो लोग होमवर्क करते बैठे. What have you compared last? Okay, PPT झाला का? नहीं ना? पुढे अजून पेंट आहे. ठीक आहे. Hello, am I audible? Okay, I think we'll start with the next part. I wanted to open your. Anybody joined today? One. Anybody else? बाकी सब कोई है ना? क्या joined हुए? बाकी का था ना? अरे क्यों सेकंड में? आया ना? होगा मेरा, है ना? Okay. Ma'am, what's your name? नेहा. स्कूल कितने हुए बाल बाल के? 1 2 3 4 5. बाकी अलग देव ना. ओके, we start with the part. अपन ने शायद स्टार्टिंग का पार्ट कर दिया था, सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट. किसी ने कुछ लिखा भी है शायद से. Okay, Anjali you now also कर दिया था. Okay, can I get a volume? आवश्यक है. अब आपके बुक में चेक करोगे, they have given you unicellular, multicellular, structural cells, special features, plasma, membrane, diffusion और सब कुछ किया हुआ है. फिर न्यूक्लियस दिया हुआ है, and then they given you various cell organelles. इन्होंने पहले न्यूक्लियस एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद सब सेल ऑर्गेनल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. सो वी वुड बी आल्सो गोइंग इन द सेम पार्ट. सिर्फ हम थोड़ा न्यूक्लियस बात नहीं करेंगे. We'll do it afterwards. First complete the various cell organelles. Okay. Time being के लिए आपका वॉल्यूम क्लोज कर देना. Just focus on the board. And doubts are there, you can definitely ask. We said that there is a structural and functional unit of life. Who discovered the cell? Who discovered the cell? तो ज़्यादा ही पढ़ाई कर लिया है तुमने. Okay, Robert Hooke. In which tissue? Cough tissue. Cough tissue. Where is the cough tissue present? Behind the bark of the tree. Good. So it is behind the bark of the tree. The bark. Okay. Now, based upon the cell, we say the cell is unicellular or multicellular. Can you give me an example of 3 unicellular organisms? किया था सर. Okay, the entire living beings are divided into 2 types, unicellular as well as multicellular. I hope ये पता होगा unicellular multicellular क्या होता है. What is unicellular? Multicellular? Many cells come together. So can you give me example of unicellular organisms? Virus. Amoeba. Virus. Bacteria. Plasmodium. हो गया. So unicellular examples are सबसे पहला bacteria, second amoeba, plasmodium, paramecium, yeast. Okay, we do not give virus as an example because virus outside the body is dead, inside the body is living.
So we always say viruses are on the borderline of the living and non-living. So virus example. I think more than enough. 3 तो याद नहीं जाएगा. Okay. The best option is bacteria, amoeba. Example of multicellular organisms. Humans, animals, plants, fish, reptiles, aquatic animals. हो गया? अब मेरा जनरल नॉलेज क्वेश्चन. Okay? Humans, reptiles, birds, fish, aquatic animals. ये animals में नहीं आते. Okay? मतलब मैंने बोला नाम बता तो सर ह्यूमन, उसके बाद सर इंडियन, उसके बाद सर महाराष्ट्रियन, उसके बाद सर स्टूडेंट, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद ड्यूटी का नाम, उसके बाद स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट बॉयज. सब कुछ जनरलाइज बोल रहे हो. Here also you could have given a general name. Amoeba, Paramecium, Plasmodium, प्रोटोजोआ में आता है, इस फंगाई में आता है. अगर वो लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. You are giving me the group name. You are not giving me the individual example. Okay? If I ask you your name, आपके सरनेम बता दो मुझको. नहीं ना? चलो ग्रुप का नाम नहीं चाहिए. So when I say multicellular organisms, obviously human beings is the first example. हमें बोलना है कि हम humans are animals. उसके बाद animals और plant लिखना है. Okay? You have to be specific. टाइगर, लायन, कैट, डोंकी, मंकी, चिंपैंजी, ओरंगुटन. अपने भाई बहन का नाम लिख के आ जाता. ये डोंकी, मंकी, चिंपैंजी, ओरंगुटन, कॉकरोच, हाउस फ्लाई. प्लांट में अगर लिखना है तो रोज नहीं लिखना है. रोज प्लांट, शुगर केन प्लांट या मैंगो ट्री. जब मैंगो फल होता है, मैंगो ट्री ऑर्गेनिज्म है. सो ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर. एग्जाम में विल दे आस्क मल्टी सेलुलर नेम्स? नहीं. Unicellular में पूछ सकते हैं, पर multicellular chances are very less. Am I clear? Now we go ahead to is हमने कहा cell feature है, defining है, सब कुछ है. So there are 3 basic features of a cell. अगर ये 3 feature है तो we say it is a cell. So what are 3 basic features of a cell? Good. सबसे पहले a cell has a plasma membrane or what we say as cell membrane. Good. Cytoplasm. Each cell has a cytoplasm. And last, it has a nucleus. So these are the 3 important features of a cell. Identifying features of a cell. ये 3 है तो वो cell है. Secondarily, everybody signed? Okay. Secondarily, the nucleus may be absent or not, that is different part. But primarily, सब में ये 3 part है. So we would be studying each one. Plasma membrane, cytoplasm, and the nucleus. Shall I go ahead? Okay. Now, plasma membrane आपके बुक में डिटेल में दिया हुआ है. मतलब सिर्फ फंक्शन दिया है, फंक्शन के अंदर सब फंक्शन डिटेल में दिया है. Right now we only focus on the functions. सब फंक्शन अभी नहीं करेंगे, पर कंफ्यूजन होगा पड़ेगा. So वो बाद में करेंगे. बाद में मतलब स्किप नहीं कर रहा, we'll do it afterwards. Okay. So now first of all, plasma membrane. Okay. What can you say about the plasma membrane? It is the plasma membrane cell wall. Innermost, inner layer, outer layer क्या है? Outer layer of which cell? चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं. Which is this and which is this? Any idea? Plant cell, animal cell. What is this? Cell wall, cell membrane. What is this? Cell membrane.
So the first thing we need to understand is plasma membrane. It is the outermost layer of the animal cell, and second layer of the or inner to the cell wall in the plant cell. एनिमल में आउटर मोस्ट है पर प्लांट में इसके अंदर है, सेल वॉल के अंदर है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग यू नीड टू नो इज व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली मेड अप ऑफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली मेड अप ऑफ lipo proteins. Heard about these terms? Okay. What do we eat in terms of nutrients? Carbohydrates, fats, proteins. Good. Nothing चाहिए. What is the another name for fats? Biological term पता है? Fats are commonly referred as lipids. हम फैट्स कभी वर्ड यूज नहीं करते बायोलॉजी. जनरल में हम बोलते हैं फैट्स, बट व्हेन यू गो इन हायर क्लासेस 9 10 वगैरह में we always use the word lipids. So what are the components we take in? Proteins, carbohydrates and lipids. Lipids are another name for fats. So what is cell membrane or plasma membrane made up of? Plasma membrane is a combination of lipid plus proteins. अब लिपिड और प्रोटीन को कंबाइन कर दिया तो शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं उसको lipoproteins. So the first thing, plasma membrane is made up of lipoproteins. Am I clear? Everybody? कोई डाउट है? Okay. Now, so it is made up of lipoprotein. It is the outermost layer in the animal cell. Now we try to understand the functions of plasma membrane. What could be the probable functions of plasma membrane? अगर सबसे बाहर का लेयर है तो क्या कर रहा है? Good. So it helps in protection. It protects the cell. Okay. Then any other? Okay. So here basically transports. It transports substances across it. Okay, substances in, substances move out. All that is done by plasma membrane. Third, it separates outer medium with respect to the inner medium. So there is a separation created because of the membrane. So हम बोलेंगे ना ये सर outer medium है और ये inner membrane. So it is a boundary basically which is separating that part. Somewhat it gives shape. So not exactly proper shape, but थोड़ा बहुत shape maintain करने का cell membrane भी करता है. Like RBCs वगैरह थोड़ा circular होता है. अगर ज़्यादा shape change हो गया, cell membrane ज़्यादा stretch हो गई, तो shape change हो जाएगा. So somewhat it maintains a shape, but in animal cells. Okay, because in the plant cell, who will maintain the shape? Cell wall. Shape cell membrane का इतना important function because flexible है तो वो change हो सकता है. But cell wall is rigid, so can it be changing its shape? No. So protection, transportation, separation, okay, shape. Then some protection not only from substances moving in and out, preventing from the cell from drying out, okay, that is desiccation. Also, it is preventing from any bacteria, foreign substances entering within the cell. So all that comes under protection. Transportation, cell would move in and out. Chemical substances move in and out. Again, transport जब अपन बोलते हैं substances moving in and out, we need to understand one more term which is very important in our answer. Okay, one we said it is made up of lipoproteins. And the cell membrane is semi-permeable, or what we say as
selective permeable. Can anybody say me what is semi permeable or selectively permeable? मुझे आइडिया है? हाँ या ना? ओके, अपने क्लास के बाजू में क्या है? जस्ट लग के क्लास के नहीं, क्लास के बाजू में, बाहर बाहर क्या है? ग्राउंड है. गए हो? गुड. सो व्हेन यू एंटर द ग्राउंड देयर इज अ गेट. कोई आपको रोकता है वहां पे? ये तेरा ड्रेस अच्छा नहीं तो अंदर नहीं जा सकता. यू कैन मूव इन एंड आउट. एनीबॉडी कैन गो इनसाइड. चाहे वो बेगर हो, चाहे वो अंबानी हो, सबको अलाउड है. हाँ या ना? ओके. मॉल गए हो तो मॉल में भी अलाउड करते हैं. अब मॉल के अपना लिटिल वर्ल्ड है, 3rd फ्लोर पे थिएटर. ओके, वहां पे अलाउड करते हैं अंदर. किसको अलाउड करते हैं? इसके पास टिकट है. ठीक है. आप बिल्डिंग में रहते हो, कॉम्प्लेक्स में. कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड है. सबको अलाउड करते हैं अंदर आने के लिए? नहीं. किसको अलाउड करता है? Okay. Can I say they allow only selected people to enter? जब permeable means to move in and out. Okay. Semi permeable मतलब कई जन को अलाउड किया जाता है, कई जन को नहीं. Substances can move inside, but some of them are allowed, some of them are not allowed. Same also referred as selectively permeable. So what is selectively permeable? When a substance is moved within the cell, okay, some substances will be allowed. Like चलो प्लस साइन है, माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ऐसे substances मान के चलना. Okay, this is allowed, पर इनको allowed नहीं किया है. So can I say out of many, some are allowed, some are not allowed? Then that is known as semi-permeable or selectively permeable. Clear with this, everybody? Okay. अब चलो nature में when substances move across anything, तो हम उसके लिए word use करते हैं permeability. Permeability means the power to allow or not to allow. Okay. So on this basis, there are 3 types of permeability. एक होता है, दूसरा होगा, वो दोनों एक ही है. गुड. फुल्ली परमिएबल, इसे अपन बोलते हैं फुल्ली नहीं, इसको बोलते हैं फ्रीली परमिएबल. कोई भी अंदर जा सकता है. ये कार्डन एग्जांपल. तीसरा क्या होगा? गुड. इम्परमिएबल. चलन इम्परमिएबल अपने लिए लागू सकता है, जो किसी को अलाउड ही नहीं करना है, तो समझ में आता है. बट इन सेल्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर इज नथिंग लाइक इम्परमिएबल. बिकॉज सेल को अगर जिंदा रहना है तो एटलीस्ट एयर तो लेना पड़ेगा. रेस्पिरेशन के लिए तो उसको अंदर आना पड़ेगा. सो कैन इट बी इम्परमिएबल? नो. सो इन नेचर देयर आर ओनली 2. देयर आर फ्रीली परमिएबल और देयर इज सेमी परमिएबल. ध्यान देना. व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेमी और फ्रीली? सेमी परमिएबल. बचलन सेल वॉल जो आगे पढ़ोगे इस फ्रीली परमिएबल. सेल वॉल अपना मॉल है, मॉल में सब लोग अंदर जाते हैं. सेल वॉल पहला लेवल है, सब कुछ अलाउड करता है, वो भाई आने दो. तो उसके ऊपर टिकट को अंदर अलाउड किया था. तो एग्जैक्टली सेम थी ना. उसके आगे क्या है? Is it allowing everything to move inside? No. वो वहां पे स्क्रीन करेगा. Selectively permeable. Am I clear, everybody? Okay. So these are some of the functions of cell membrane. कोई डाउट है? आगे बढ़ो. Okay. अब this
transport or movement of substances within or outside the cell are further divided into special categories like diffusion, osmosis, endocytosis, exocytosis. आपके बुक में चारों दिए हुए, ये अपन टाइमिंग के लिए स्किप कर रहे हैं, तो अभी पढ़ाने जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो पहले बेसिक समझ में लेंगे, तो आगे बढ़ू। तो अगर एनिमल सेल है, सो आउटर मोस्ट लेयर वाज सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज इट केमिकली मेड अप ऑफ? lipoprotein. In terms of permeability, what is cell membrane? Semi permeable or selectively permeable. Okay, so now we go on to the next part. Plasma membrane के साथ में ही हमें पढ़ना होता है cell wall. Why cell wall? Because जैसे plasma membrane animal में outermost layer है, वैसे plant में cell wall is the outermost layer. Which cell has a cell wall? Plant cell. So अगर distinguish आया between plant cell and animal cell, what you will write? Plant cell has a cell wall. Animal cell wall is absent. Clear? Now, आपके बाजू में दीवार है. What is it made up of? सीमेंट वगैरह. मान लो ये भी दीवार है. What is it made up of? वुड. अभी फिलहाल पीछे सीमेंट ही है, तो अपन मान लेते हैं वुड का है. सर दोनों दीवार का ही काम कर रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? मटेरियल. एक सीमेंट है और एक वुड है. ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी ऊपर के मतलब वो बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, दिस कैन बी ब्रोकन, ऐसे मान के चलते. Same way children, when I say cell wall, so cell wall is a characteristic feature of plant cell present in the plant cell. अभी आपके लिए plant cell है, but when we go into next chapters, classification वगैरह में, तब आपको समझ में आएगा cell wall या entire animal group के organism groups, living organisms are divided into 5 kingdoms. कहीं पढ़ा है? 6 में था शायद, 6 से 7 में होगा. 5 kingdoms. अरे हाँ या ना तो बोलो नहीं. चल दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेके जो भी अवेलेबल होंगे, इन सबको अपन ने ग्रुपिंग किया हुआ है, जो अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स जिनको बोला जाता है किंगडम. सो ग्रुप का नाम है किंगडम. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया. सुना होगा एटलीस्ट. क्लास को सुना होगा, क्लास के 2 तो पढ़े होंगे. अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बस बाद में पढ़ने वाले भी हो. सर मोनेरा का एग्जांपल है बैक्टीरिया. आई होप तुमने सुना है. प्रोटिस्टा का एग्जांपल है अमीबा, पैरामशरूम. फंगाई का एग्जांपल है ईस्ट, मशरूम. प्लांटे का एग्जांपल है, दिखाई दे रहे हैं. एनिमेलिया क्या, हम नमूने दिखाई दे रहे हैं. Okay, so all of them are there. Does animal have a cell wall? No. So in the cell wall, nahi. That's the main feature. Those which do not have a cell wall, I cannot prepare them for animals. Simple है. Okay, बचपन बाकियों में प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं, पर ये यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर विदाउट अ सेल वॉल के बदले सेल प्लेट होता है. पर बाकी मोनेरा, फंगाई और प्लांटे तीनों में सेल वॉल होता है. सो अपने लिए सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर टूज आल्सो, बट द बेसिक डिफरेंस इज तीनों में सेल वॉल है पर मटेरियल अलग अलग है. कहीं सीमेंट है तो कहीं वुड है, कई जगह पे ग्लास होगा, वॉल की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे ग्लास वॉल और वुड नहीं है. हियर द सेल वॉल इन द प्लांट, अभी हम सिर्फ प्लांट से ट्रीट कर रहे हैं,
So the cell wall in the plant is made up of cellulose. अगर वो बैक्टीरिया है तो it is carbohydrate and protein. Cellulose is carbohydrate only. बैक्टीरिया में कॉम्बिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और फंगाई में इट इज नोन एज चिटिन, which is a protein compound. Okay? मतलब एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का ही कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है. तो दिस आर सम ऑफ द पार्ट. अभी फिलहाल यही पढ़ना है. सेलुलोज सुना है कहाँ पे? ये बेस्ट पार्ट था. Where do you normally get cellulose? Then cellulose are fibers. अपन जो भी खाना खाते हैं प्लांट का, वो अल्टीमेटली जो फाइबर्स होते हैं वो सेलुलोज का पार्ट है. वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. कोई ऑर्गेनिज्म सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता. इसके लिए वेजिटेरियन को खाना खाते हुए टाइम लगता है टू डाइजेस्ट, बिकॉज सेलुलोज इतने आसानी से टूटेगा है. फॉर इट टू डाइजेस्ट देयर आर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर स्टमक, इन आवर इंटेस्टाइन, व्हिच विल टेक केयर ऑफ इट. ओके, सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose. It is the outermost layer in the plant cell. So what is the function? Then what is the function of cell wall? Almost similar. Protects the plant cell from drying. It prevents the things to move inside the cell to say move. Transport. It allows substances to move freely inside, okay? Because it is freely permeable. सब कुछ allowed कर देता है. It separates the inner content to the outer content. Important है. It gives shape, framework, rigidity to the cell. जब हमारा shape, हमारा support, हमारा फ्रेमवर्क कौन कर रहा है? बोन्स. प्लांट है बोन्स नहीं, पर वो खड़े रहते हैं. सो दैट शेप इज मेंटेन बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. और भी बहुत सारे है उसमें, बट सेल वॉल आल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द शेप, फ्रेमवर्क ऑफ द प्लांट सेल. एम आई क्लियर? एवरीबॉडी? कोई डाउट है? फंक्शंस इनके दोनों के सेम ही है, सिवाय जो अपन जो स्पेशल फंक्शन पढ़ने वाला है वो इसमें नहीं आएगा, कि वो सिर्फ इनमें ही होता है. बट फंक्शन, बेसिक फंक्शन में प्रोटेक्शन है, आउटर लेयर है, सेपरेट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, शेप मेंटेन कर रहा है, रिजिडिटी, फ्रेमवर्क, ये सेल वॉल का पार्ट है. एग्जाम में फोकस 2 पॉइंट पे करना है. One, what are they chemically made up of? So cell membrane was chemically made up of. चलो मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, बोलना नहीं है. Lipoprotein. Cell wall is chemically made up of cellulose. Cell membrane is transportation के हिसाब से it is semi-permeable. Cell wall is freely permeable. Clear? So that completes the plasma membrane and the cell wall. Shall I go ahead? Okay. Next we need to understand is the cytoplasm. आपको लिखना है क्या? लिखना है? वॉल्यूम में लिखा हुआ है. गधा मुझे करना है. Why you want to write? वॉल्यूम में सब कुछ दिया हुआ है सर. बड़ा वर्डिंग इधर उधर होगा, पर सब कुछ प्रॉपर्ली दिया हुआ है. हाँ, जो आपको लिखना होगा मैं बताऊंगा, ये आपको लिखना है. Okay. So right now just focus, listen. Next. The next organ we want to study, the part we want to study is cytoplasm. What is cytoplasm of a cell? Solid, liquid, gaseous, क्या होगा? बोलो. हाँ, साइटोप्लाज्म कौन से स्टेट में?
It is basically cell product. मतलब ना ये liquid है, ना ये solid है. Okay, something like a jelly-like structure. Okay, that is what cytoplasm is. It is semi-solid. It forms the ground matrix of a cell. Ground substance या ground matrix का ground substance या ground matrix. Now, what do you mean by ground substance or ground matrix? अपना classroom example मानते हैं. एक cell है. So, what is this wall? Cell के comparison में ये walls क्या होगा? Cell membrane. Okay. Flooring क्या होगा? इस cell का base यही है. So, this base is known as ground substance या matrix. The base of the cell, which is known as cytoplasm. So, what is the function of the cytoplasm? Within the cytoplasm are present various cell organelles. They are small structures which have definite shape and structure and function. And it is this cytoplasm where all the chemical reactions of the cell take place. इस क्लास में जो भी हो रहा है उसका बेस क्या है? फ्लोर ना. मैं खड़ा हूँ फ्लोर पे, आप बैठे हो फ्लोर के पैर टच किए हुए, बेंचेस है फ्लोर पे रखे हुए, हवा में कुछ है नहीं. All the reactions which are occurring within the cell. So where is it taking place? Ultimately in the cytoplasm. So it is this cytoplasm which provides the site for all the chemical reaction. इसमें कुछ पढ़ने के लिए है, एक आध लाइन यहाँ, इतना ही है इसके. अब हमें कुछ और पढ़ना है. साइटोप्लाज्म के साथ में हमें पढ़ना होता है another term, protoplasm. Now understand the difference. Just cytoplasm is a non-living material. मतलब ये you can say almost like a dead part है. इसमें कोई खुद का living part नहीं. So it's just a water or chemical. Are chemical alive? No. तो ये कोई important नहीं. But is cell a dead or living? Living. मरना बात अलग होता है. Normally it is living. And when in the cytoplasm you add nucleus, then that is equal to protoplasm. तो इस क्लासरूम में ये सेल हुआ, फ्लोरिंग अपना साइटोप्लाज्म हो गया, कोई भी नहीं है तो वो कुछ काम का डेड है. But the moment we all come in the class, it becomes a lively class. आया ना, तब तक कोई क्लास नहीं है ना वो. Son, that time I would say it is a room. But the moment you add up, I come in, it's a lively class. So हम अपने आप सबको मिला के बोलते हैं. So when a nucleus is added into the cell cytoplasm, it is referred as protoplasm. So technically, all the organelles along with the nucleus present in the cytoplasm constitutes the protoplasm. Without a done. Next part. अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे the most important part. Okay, that is the third characteristic feature. क्या था? Nucleus. Okay, so यहाँ पे आपको book में draw करना है. So you will be drawing along with me. Nucleus part. So give the heading nucleus and you will draw. What is nucleus basically? क्या बोलते हैं उसको? Brain of the cell और कुछ? A nucleus is referred as the brain of a cell, a director of a cell, a controller of a cell. It is this nucleus which helps in cell division. It is this nucleus which controls all the functions of the cell. So, सबसे important nucleus for a cell. So the nucleus was first discovered by
रॉबर्ट ब्राउन। नाम ध्यान देना, मैं तो खिचड़ी पका के आओगे। वो पहला वाला कुक है, दूसरा वाला so एक कुक है और एक ब्राउन है, so do not write interchange करना। So Robert Brown first identified a nucleus. Now nucleus is made up of, it is a director of a cell. So simple word में we say nucleus is the director of a cell or it is a brain of a cell. Now what is the structure of a nucleus? Nucleus has a unique structure. Let me draw, then you draw. The nucleus is a circular structure and it is a double membrane structure. Okay, so you can see outer membrane and a inner membrane. This membrane is cell membrane only. पर ये आप कहाँ पे है? न्यूक्लियस। इसके लिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Exactly same like cell membrane only. ये भी लाइकोप्रोटीन, सब कुछ सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है। सिर्फ फर्क इतना कि ये न्यूक्लियस का पार्ट है, so it would be separating the cytoplasm with respect to the nucleus part. Okay, it will protect the things from not going inside the nucleus. Okay, transport substances across the nucleus. Now, this double membrane nuclear membrane, is it completely intact or there are gaps? There are small gaps. These gaps are referred as nuclear pore, through which the cell volume बंद करके बोलना कितना अच्छा लगेगा। Close the volume. It is through this nuclear pore the cell or the nucleus communicates with the cytoplasm. So जो भी information देना है यहाँ से बाहर जाएगा। समझ में आया? Then within the nuclear membrane there is a ground matrix. What is it referred as? Cytoplasm. ये सेल था, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। पर किसके अंदर है? न्यूक्लियस। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। है साइटोप्लाज्म ही, पर न्यूक्लियस के अंदर है, इसके लिए न्यूक्लियोप्लाज्म। Slightly thicker than the cytoplasm. Then within the nucleoplasm we are able to see thread-like structures. What are these thread-like structures? Chromatids and chromatin. Chromatin fibers. Okay, so there are thread-like structures known as chromatin fibers. Within this chromatin fibers and the nucleoplasm के अंदर scattered है ये thread-like structures. इसी scatter part में there is a darkly stained structure. एक होगा या दो होगा, अपन normally एक ही draw करते हैं. This darkly stained structure is known as nucleus. Draw. Do not draw nucleus with the rounder. Then वो थोड़ा perfect circle नहीं होता है, थोड़ा 19-20 हो गया चलेगा,
अरे इतना ऊपर ड्रॉ करेगा, इतना बड़ा ड्रॉ करेगा, कितना पेज वेस्ट करेगा, ये क्या यहाँ पे क्या कबड्डी खेलने वाला है? तो वैसे तेरा बुक लर्निंग है, बायो का बुक है ना? ये अपना आर्ट स्टूडेंट नहीं है, बायो के टीचर स्टूडेंट है, कभी भी ऐसे ऐसे ड्रॉ नहीं करना होता है। परफेक्ट राउंड नहीं चाहिए अपने को, मैथ्स का ज्योमेट्रिकल सर्च नहीं चाहिए अपने को, सेल का चाहिए। थोड़ा 19-20 हुआ चलेगा, हाथ रखना है। अंडा खाया होगा ना इतना इतना बड़ा, सब लोग ने अंडे बहुत खाया है, किसी का भी राउंड नहीं आ रहा है, अंडा ही ज्यादा आ रहा है। इस मैडम का तो आगे प्रॉब्लम है। कंप्लीट एवरीबॉडी, ओके। न्यूक्लियस में हमें दो चीजें पढ़नी, एक तो जनरल फंक्शन, दैट इज इट इज अ डायरेक्टर, but it controls the cell division or it helps in cellular reproduction, ये बेसिक है। तो उसके पहले हमें सब पार्ट्स को समझना है। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है वो है चीज ऑफ आउटर मोस्ट पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So what can you say about nuclear membrane? It is just like a cell membrane forming the outermost layer of the nucleus. Okay, protection, it is dividing the nucleus to the outer or inner cytoplasmic content. Then this nuclear membrane is पहला और एक है, is it single layer, double layer? So nuclear membrane in the nucleus is double layer. Okay, because majority of the organelles is single layer, सिर्फ nucleus में double layer. And is it intact? No, it has small gaps which are known as nuclear pores.
through which it communicates outside. समझ में आया? कोई डाउट है? No. Then nucleoplasm. What is nucleoplasm? The ground matrix of the nucleus, similar to cytoplasm. साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या था वहां पे अपन ने पढ़ा? अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा था. Cytoplasm. It is this part where the chemical reactions of the cell takes place. So nucleoplasm में क्या होगा? Chemical reaction of the nucleus takes place. इसके अंदर तो nucleus का ही होगा. So all the chemical reactions which occur within the nucleus, that occurs within the nucleoplasm. समझ में आया? अब उसके बाद important. The nucleoplasm has within its scattered thread-like structures. What are these thread-like structures? Chromatin fibers. What are chromatin fibers? किसने कहा? Genes. और कुछ? Okay, I think well right. We'll continue from here next time onwards. Okay, so I think chromatin fibers next time मैं draw नहीं करूँगा. So we'll just go ahead with this part. Okay. Homework. आप न्यूक्लियस तक पढ़ के आओ. Okay. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये पढ़ के आओगे. सेल मेम्ब्रेन में प्रोसेसेस के नाम भी है, वो नहीं पढ़ो. बाकी जो स्टार्टिंग के पहले 2 पेज होंगे वॉल्यूम के, वो पढ़ लेना. And next time I might ask questions. So if you don't read, then you are outstanding. Newcomer, homework है, and not writing. जो आप कर रहे थे आप सब. मैं बोलता सर सब मैथ्स होमवर्क कर रहे थे मेरे लेक्चर. ऐसा मैं बोलूँगा. ऐसा मेरे लेक्चर में कंप्लीट कर रहे.